So, Namaskar all of you. So, this is a presentation on new batches for Odisha Judicial Service for the month of July 2024. So, July 2024 रो जो हमारा batches अच्छी Odisha Judicial Service में. So, total हमारा जो देखिबा ताले we are having around 6 different courses. Okay, till success integrated batch, 1 year integrated batch, 1 year pre-com main answer writing batch, prelims test series, mains test series और interview preparation batch. So advantages कौन होची हमरो aarohan classes रे join कले. First ताला आपनकर जो माने classroom batch रे join करछंती तांको पई reading room टा available रहउची. तो reading room especially जो माने hostel रे रहउचंती और तांको हॉस्टल रे पढ़िया पे प्रॉब्लम होची तो से माने रीडिंग रूम रे आपनकर पढ़ी परिबे सकाळ 8 रु राति 8 टाइमिंग तार रहउची. तो रीडिंग रूम फैसिलिटी टा आपनकर रहउची. तापर रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहउची. तो जोटा कि मेंस एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट काहे ना ओजेएस रे बहुत कैंडिडेट्स अछंती जो माने लॉटा जानी चंती ठीक रे किंतु से माने रिपीटेड अटेम्प्ट्स परे भी तांको नाटा मेरिट लिस्ट रे आसेनी काहे ना से जो स्टाइल रे लेखंती मे बी सेटा एग्जाम ओरिएंटेड नो. तेणु रेगुलर आंसर प्रैक्टिस जदि आपण करूचंती ताले जो पर्टिकुलर स्टाइल रे लेखिबा कथा एग्जाम रे एक्सक्यूज मी सेटा आपण जानि परिबे. तापरे टेस्ट सीरीज आपणकर रेगुलर क्लासेस वीकली टेस्ट प्लस टेस्ट सीरीज भी आपणकर सेगुडा एथरे इंक्लूडेड थाए. तार मॉडल आंसर एक्स्ट्रा सेडा सब आपण पाई जिबे ऐप थ्रू रु. स्टडी मटेरियल प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा हुए. डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ मेंटर्स इन ऑल सेशंस. तो क्लासरूम स्टूडेंट्स तो एटा डायरेक्टली से माने इंटरेक्ट करि परिए फैकल्टी संगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली इंटरेक्ट करंती थ्रू गूगल मीट. जहाँ भी आपण डाउट्स हैला इमीडिएटली भी आपण पचारि परिबे थ्रू वॉइस. और जहाँ रिसोर्सेस आपण को रहला दरंतु स्टडी मटेरियल रहला क्लास नोट्स रहला एगुडा सब आपण ऐप थ्रू रु आपण एक्सेस करि परिबे. तो कोर्स हमरो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज रुए जुडिशियल सर्विस पे. तो अर्थ हला आमे कोनोसी पोर्शंस छाडुना. तेनु प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू ऑल 3 पार्ट्स और इवन सेथरे भी मेंस रो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अछि पांचटा जाक ऑप्शनल आमे प्रोवाइड करूछु. तो आपण ता भितरु जो तीनटा आपण को इच्छा आपण चूज करि परिबे. आमे आपण को पे चूज कर दोनु कि आमे ई तीनटा ही दबु. वी आर प्रोवाइडिंग ऑल 5 ऑप्शनल्स. आपण निजे ऑप्शनल्स देखि कि बहुत जण करता है कि को ऑप्शनल टा नबु. तो आपण पांचटा जाक ऑप्शनल रो वीडियोस देख सारला पर भी आपण डिसाइड कर परिबे. इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग रहउची जोटा कि 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट रहउची. जदि आपण कोनोसी गोटे डाउट आसिला तो सेटा थ्रू व्हाट्सएप भी आपण पचारि परिबे. तापर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपण कर रहउची क्लासरूम पिलांग पई भी और ऑनलाइन पिलांग पई भी. तो टेस्ट जेमति मु कहली हमरो बहुत गुडे टेस्ट ओपन टेस्ट भी थाए जोटा हमर टेलीग्राम चैनल रे भी दिया हुए. तो सेटा भी ऑल स्टूडेंट्स कैन यू नो अटेंड दोस टेस्ट्स. ओके हमरो मैक्सिमम फोकस था आंसर राइटिंग ऊपर काहे कि ना आंसर राइटिंग ऊपर माने आपन मॉडल आंसर टा दिया हबो कि एई जदी क्वेश्चन पड़ला ताले एई टाइप रो आंसर टा आपन लिखिबार अछि. सेतरे कोन कोन कंपोनेंट्स रहइबो आंसर रो. ठीक अछि. सेम कंटेंट रे तीनटा पिला तीनटा डिफरेंट टाइप रो आंसर लिखिबे और मार्क्स भी अलग अलग आसे सेतरे. ओके तो पर्टिकुलर को स्टाइल रे लिखले मते अधिक मार्क मिलिबो सेटा मते जानिबार अछि. तापर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जनकर इंग्लिश और ओडिया रे इशू थाए. ओके स्पेशली जदी ओडिया लैंग्वेज आपण प्रॉब्लम अछि ताले से ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन क्वेश्चन 50 मार्क्स आपनकर अफेक्टेड हबो. तो ता पई भी हमर प्रॉपर क्लासेस थाए. जो माने लमसम दे पारु नांती लमसम देले आपण 10% वेवर मिले. जदि आपण लमसम दे पारु नांती ताले आपण ईएमआई रे भी दे परिबे. ओके मंथली इंस्टॉलमेंट्स रे भी दे परिबे. सो एटा हमरो टाइम टेबल टा. दिस इज द टाइम टेबल जोता कि हमरो इंग्लिश क्लासेस रहउची 10 टा रु 12 टा मंडे ट्यूसडे. ओके इंग्लिश एंड ओडिया. तापरे वीकली टेस्ट्स आपनकर प्रीलिम्स और मेंस रो 4 टा रु 6 टा रुए और 6 टा रु 8 टा इंपोर्टेंट मैक्सिम्स और इंपोर्टेंट केस लॉ रो क्लास रुए.
आमर जेतु संडे टा हॉलिडे न थाए तो आमर वेडनेसडे टा हॉलिडे थाए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे यू आर हैविंग 3 sets of theory classes taken by 3 different faculties ओके जेमति कि एबे theory 1 रे आपनकर आईपीसी चलची जोटा कि लास्ट बैच जेतु नेक्स्ट बैच रु आईपीसी टा रहिबनी तो एटा प्रोफेसर डॉक्टर पीके राणा सर नउचंती जे कि एमएस लॉ कॉलेज हो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज रो एक्स प्रिंसिपल तापरे सेकंड थ्योरी एबे करंटली चलची ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जोटा अभिजीत सर नउचंती आउ थर्ड आपनकर एटा हमर नुवा लॉस जोटा अछि दैट इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेटा चलची एबे ओके जोटा कि मु नउची निजे तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपन तीनटा स्टैट्यूट चलता है बहुत जनकर एमती थाए कि हमें जल्दी कोर्स सार दउ तो आपन फुल टाइम प्रिपेयर करछंती ताहले भी आपन पूरा तीनटा जगह क्लास अटेंड करिकी आपन जल्दी भी कोर्स सारी परिबे ऑल्दो दैट इज नॉट रेकमेंडेड कि आपन तीनटा स्टैट्यूट एक संगे पढंतु मैक्सिमम दीटा काहेना सेटा पढे पुनी डिटेल्स रे आपन पढाय पड़िबो गोटे चैप्टर सरला तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री और मेंस रो सेगुडा करिया पड़ियो सो इट टेक्स टाइम एमती नाही कि बैरक धरि कि थरे पढी देली तो मोर स्टैट्यूटा सरी गला राइट नाउ कमिंग टू द कोर्स डिटेल्स तो फर्स्ट कोर्स जोटा हमर फ्लैगशिप कोर्स सेटा हला टिल सक्सेस इंटीग्रेटेड बैच एबे टिल सक्सेस इंटीग्रेटेड बैच रे बेसिकली तार जो फीचर्स उडा अछि तो एथरे जा जा मु कहली प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऐप एक्सेस रोची टिल सक्सेस माने ऐप ताको डिफाइन करछि 30 इयर्स 30 वर्ष पर्यंत आपनको एक्सेस रहइबो ओके तापर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो मॉडल आंसर्स करिका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंटरव्यू सपोर्ट टिल सक्सेस पाइला पर्यंत ओके सो दैट इज बेसिकली जेतला हम टिल सक्सेस कहूछु जो ऐप हम यूज करछु ऐप रे टिल सक्सेस हैज बीन डिफाइंड एज 30 इयर्स 30 वर्ष पय आपनकर ऐप टा ओके आउ जहां भी आपण पाइला पर्यंत आपण सेटा ओके एक्सेस करि परिबे राइट तो एटा बेसिकली जो माने कि जदि कि पैटर्न चेंज होउची से माने अफेक्टेड हेबेनी जेमति एबे नेक्स्ट ईयर ए वर्ष 2024 बैच रे आपनकर न्यू लॉज आसे जिवो ओके तो जो माने 2 इयर्स ला प्रिपेयर करछु कि 3 इयर्स ला प्रिपेयर करछंदी एबे तांको किछि छोट छोट चेंजेस करिया पय पड़ियो बहुत बड़ तो चेंज नो बट छोट छोट चेंजेस करिया पड़ियो तो ए इंटीग्रेटेड बैच जो मन जॉइन करछंदी दे आर कवर्ड तांको एक्स्ट्रा किछि कोर्स फी दबार नै कि सेमति किछि करिवार नै ओके तो से मानको पे तो एथरे कोन ना जो माने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अछंती जोन चाहउछंती कि नै फर्स्ट अटेम्प्ट रे हमें क्लियर करिवु तो से माने भी जॉइन कर परिबे जो माने ग्रेजुएशन सारी सरचंदी एलएलबी बट से माने चाहउछंती कि हमें पाइला पर्यंत हैंड होल्डिंग हो तो से माने भी जॉइन करि परिबे क्लासरूम रे आरो फीस होची 40000 जोटा आपण इंस्टॉलमेंट्स रे दे परिबे आउ जदि वन टाइम दउछन त 10% रे आपनको ओके डिस्काउंट मिलुची तो सेटा 36000 रोची ऑनलाइन रे जो माने टिल सक्सेस बैच नउचंती तो 30000 रोची इंस्टॉलमेंट्स रे 27000 रोची लमसम तापर नेक्स्ट कोर्स टा हला एग्जैक्टली सेम कोर्स किंतु ड्यूरेशन टिल सक्सेस जगह 1 ईयर रेस्ट एवरीथिंग इज सेम बट ऑल द फैसिलिटीज आर फॉर 1 ईयर ओनली तेणु मु ऑलरेडी जानी छी मु थरे मेंस देइची कि थरे इंटरव्यू दे सरची बट मोर मेंस रे मार्क कम अछि तो केमिति कोन मते लिखिबार अछि मते ता ऊपर ही फोकस टा दरकार ठीक अछि तो सेथि पई आपनकर ए बैच टा रहउची जोटा ऑल अदर फैसिलिटीज आर सेम एज द integrated till success batch किंतु ड्यूरेशन हियर इज ओनली 1 ईयर आरो कोर्स फी रहउची 20000 1 ईयर पई क्लासरूम रो आ वन टाइम देले एटा 18000 रहउची ऑनलाइन 15000 आ वन टाइम देले 13500 रहउची तापरे बहुत जन एमती थे कि जो हम खाली लेखि आंसर राइटिंग ही प्रैक्टिस करिवार अछि तो आंसर राइटिंग जदि प्रैक्टिस करिवे एटा 1 ईयर बैच टा रहउची तो एथरे क्लासरूम 10000 डेटा रहउची in installments and 9000 in lump sum or online 6000 installment or 5000 lump sum eta rochi only for answer writing eta तापर टेस्ट सीरीज रोची प्रीलिम्स और मेंस रो टेस्ट सीरीज एटा सही पर्टिकुलर टाइम रे ही आपनकर ओके प्रीलिम्स टाइम रे कि मेंस टाइम रे आपण जॉइन करि परिबे तार प्रीलिम्स रे एथरे 20 टा टेस्ट रोची जोथरे कि आपनकर 3500 क्लासरूम और 2500 ऑनलाइन तरह कोर्स फी रोची सेमती मेंस टेस्ट सीरीज भी 20 टा फुल सिलेबस टेस्ट रोची जोथरे 3500 तार क्लासरूम और 2500 ऑनलाइन तार कोर्स फी रोची तापर इंटरव्यू
एटा मेंस रो रिजल्ट बाहरला परे इंटरव्यू आपनकर दी प्रकार रोची जोटा गोटे कि 1 ईयर एक्सेस रोची आपन पांचटा मॉक इंटरव्यू जोटा कि 2500 रोची प्लस थ्योरी क्लासेस से दुए आउ गोटे ओनली दीटा इंटरव्यू रोची दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट जो माने मेंस क्वालिफाई करछन तो ये जुलाई 2024 रे हमर जो दीटा बैचेस थिला तो सेटा आपन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओके ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी एटा 18 जुलाई रु स्टार्ट हेची चारटा वाला बैच रो आ नुवा जोटा स्टार्ट हो सेटा 29 जुलाई रे स्टार्ट होची दैट इज बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेटा 6टा वाला बैच एटा क्लासरूम एंड ऑनलाइन बोथ द क्लासेस आर बोथ क्लासरूम एंड ऑनलाइन तो आउ जदि किछि डिटेल्स आपनको दरकार ताहले आपण व्हाट्सएप की कॉल करि परिबे 7684054656 को सो बेसिकली ओडिशा जुडिशियल सर्विस अपन जो देखिए तार लेवल ऑफ कंपटीशन टिके हाई कारण हला कि मेंस रु इंटरव्यू आ फाइनल सिलेक्शन को जीवा पई जो देखिबे ताले तार रेशियोटा बहुत ही टफ ओके कहीं ना जे भी 45 अराउंड 40 प्लस रखिले से मेंस देले जे 45 रखिले से इंटरव्यू को गले बट देन इंटरव्यू रे कोन होची ना बेसी पिला रहि जाउछंती केबे केबे जंती दी वर्ष आगु बहुत अधिक पिला थिला इंटरव्यू रे ता भितर खूब कम पिला ही फाइनल लिस्ट रे आसिले ओके सो सेथि पई रिटन पार्ट और मेंस पार्ट ता बहुत इंपोर्टेंट ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जो माने प्रिपेयर करछंती जुडिशियल सर्विस पई गोटे जिनस मन रखिए आप प्रॉपर प्लानिंग रे आपको प्रिपरेशन करिवार अछि ओके लाइक गोटे 2 इयर्स हराइजन कि 3 इयर्स हराइजन सेमती आपण जेबे देबे से हिसाब रे देखि के आपको प्लान करिवार अछि ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट नमस्कार so namaskar all of you I hope all of you have given the test weekly test samaste dichandi okay so we will just discuss the answers of the mains test okay pre रो आंसर्स तो हम खाली डिस्कस कर सकथिलु तो मेंस रो खाली आंसर टा डिस्कस करिवा so all of you are able to give the test समस्त टेस्ट देछंदी okay so first question को आसंतु so हमरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 to 10 okay section 1 to 10 थिला 1 to 20 sorry that was the syllabus so first question थिला so एटा 2 hours रो टेस्ट थिला okay 120 marks 120 minutes discuss the scope of the doctrine of res gesta under section 4 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 तो first असला 25 marks question तो एटा फर्स्ट पार्ट ता रहला स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन ठीक अछि तो मुजरा जेतबेले आपन को एई टाइप रो क्वेश्चन मिलुची तो आपन क्वेश्चन पेपर ऊपर ही ताको अंडरलाइन कर देबे स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन सेटा अंडरलाइन करियो फर्स्ट ओके हाउ डज दिस डॉक्ट्रिन फैसिलिटेट द एडमिशन ऑफ अदरवाइज हियरसे एविडेंस ओके हाउ डज दिस डॉक्ट्रिन फैसिलिटेट द एडमिशन ऑफ अदरवाइज हियरसे एविडेंस तो एटा सेकंड थर्ड हला एनालाइज द लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल चैलेंजेस associated with applying this doctrine, especially in cases involving digital and electronic evidence. Okay. So, तीनटा पार्ट से कहिछि illustrate your answers with examples from India and international case law. Okay. काहे ना res gesta concept okay आपनकर बेसिकली सेथरे बहुत गुडे इंपोर्टेंट इंग्लिश jurisprudence रो केसेस हरिका अछि ओके तो ता भितरु एटलीस्ट गोटे दिटा आपण दे परिबे तो लेट अस स्टार्ट तणो
स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर टाकू सेटा बेसी इंपोर्टेंट ताकू माइंड रे रखिबे ओके स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर नंबर 1 तापरे 25 मार्क रो क्वेश्चन जेतु ताले हमको गोटे डायग्राम करिया पे पड़िबो ओके गोटे फिगर टे हमको करिया पे पड़िबो एठी जेमति गोटे से डायग्राम टे देछि राइट कॉन्सेप्ट डायग्राम आपन को जेमति कि ए टाइप रो ओके बॉक्सेस एंड एरोज करिका से यूज करिकि जो डायग्राम्स रो क्लास में नैथिल व्हाट आर द इंपोर्टेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स ओके तो एटा स्ट्रक्चर टा में देखले एबे जो पार्ट उडा अंडरलाइन करचंदी केवल सेति की लिखिबार अछि ओके काहे ना 25 मिनिट्स अछि एठी दउची आपन को अराउंड 3 पेजेस ओके तो एक्चुअली आपन हातर लिखला बेले सेटा आउरी अधिका हे जिवो ठीक अछि सो you have to write it within a 25 marks procedural law paper रे 150 marks 150 minutes तेणु गोटे मिनिट को आपण गोटे मार्क से हिसाब रे आपण देखिले एटा 25 मार्क रो क्वेश्चन 25 मिनिट रे सारिबे ताल जाय कि पूरा पेपर टा भलो रे आपण कंप्लीट कर परिबे ओके सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हैला स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन सो व्हाट इज ओके रेस्ट जस्ट तो एटा आपण पुनी ताको इक्विवेलेंस तार भी दे परिबे इंडियन एविडेंस एक्ट संगे अवश्य सेटा आउ दरकार नाही ओके तो जोठी आपण लिखु चंदी कि रेस्ट जस्ट ओके सेक्शन 4 ऑफ द बीएसए तो सेठी भी आपण लिखि परिबे कि एटा सेक्शन 6 रे थिला आपनकर इंडियन एविडेंस एक्ट ओके 1872 सेमति भी लिखि परिबे बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच ओके तापरे पूरा सिंपल इंट्रोडक्शन देबे दिस डॉक्ट्रिन अलाउज द एडमिशन ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस and that are part of the same transaction as the event in question, even if they would otherwise be considered hearsay. So, it is exception to hearsay. Okay. So, scope of declaration set aside mark is first scope of the doctrine. The scope of and definition. The rest just translates to things done. Okay, and refers to events surrounding a particular transaction or occurrence. So section 4 of BSA, okay, ता ऊपर लिखिबे कौन से तरह कोची it states that facts which are parts of the same transaction are relevant even if they have occurred at different times or places. Okay, this section allows for inclusion of statements, actions and circumstances that form part of the same transaction, thereby providing a fuller picture of the incident. Okay, तापरे नेक्स्ट एटा फर्स्ट पार्ट टा सरला काहेना गुडे पार्ट अछि हमें तार बेसिक किछि एतर लिखिया दरकार नै जति पचाउछि सेति अपन लिखिबे सेकंड पार्ट अपन पचार थिला हाउ डज दिस डॉक्ट्रिन फैसिलिटेट द एडमिशन ऑफ अदरवाइज हियरसे एविडेंस जोटा नॉर्मली एक्सेप्टेड नो एविडेंस हिसाब रे हियरसे हिसाब ओके ताको एविडेंस हिसाब रे नॉर्मली एक्सेप्ट करबानी किंतु एई डॉक्ट्रिन केमिति सेटा एक्सेप्ट करूछि ओके सो फैसिलिटेशन ऑफ हियरसे एविडेंस तीनटा पॉइंट देछि तारी अंडर रे तो पॉइंट वाइज लिखिबार अछि जोडा मो अंडरलाइन करूची ओके इंपोर्टेंट कीवर्ड्स अपन को अंडरलाइन करिवार अछि डॉक्ट्रिन सर्व्स एज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल which typically excludes statements made outside the courtroom statements considered under res gesta are admissible if there एटा बहुत ही इंपोर्टेंट तार बेसिक रिक्वायरमेंट कोन नंबर 1 हला स्पॉन्टेनियस हेतिबा दरकार ओके इमीडिएट हेतिबा दरकार बिना भाबी चिंती की ओके इमीडिएटली जोटा कहितबा स्पॉन्टेनियस and made in the heat of the moment and without time for reflection or fabrication भाबी चिंती की ओके ताको मैनिपुलेट करकी जेमती आपण आंसर टा दे नथि ओके तो कौन एथरे इंक्लूडेड हबो दिस इंक्लूड्स एक्सक्लेमेशंस मेड बाय पार्टिसिपेंट्स और विटनेसेस ड्यूरिंग और immediately after an event which can provide genuine insight into the incident जेमती कि क्वेश्चन 2 रे गोटे आपनकर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन देछि ओके पढिबा देखिबा सेटा बट सेही लाइट रे हम टिके डिस्कस कर परिबा कोन ना रास्ता रे गोटे लोक चली की जाउतला गोटे गाड़ी टे बाडे देकी ताको पळेला ओके तो सी संगे संग जे पाखे पाखे जे जाउतले ओके तो तां कहला कि गाडटा आसला मते बाडे की पळेला ठीक अछि सो दैट मींस इमीडिएटली ही सेड स्पॉन्टेनियसली कहला कि जे कि फैब्रिकेशन करिनी कि भाबिनी ओके हीट ऑफ द मोमेंट रे कहला राइट सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड सो सेटा देखिबा एटला में क्वेश्चन 2 को जिबा तापरे रेलेवेंट लीगल मैक्सिम्स तो हमर मॉडल आंसर रे सब मॉडल आंसर से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे हमें
जो कॉन्सेप्ट पढ़ुचु तार रेलेवेंट लीगल मैक्सिम टा देखुचु सब जगह रे एटा पॉसिबल न थाए ओके सो रेस जेस्टर कौन कहूची तो रेलेवेंट लीगल मैक्सिम भीतर फर्स्ट टा ही खाली इंपोर्टेंट ओके रेस जेस्टर नॉन ए probandum separatum the whole transaction must be considered to understand the event ठीक है that one is only enough okay and the things speak for itself that is res ipsa loquitur okay तो सेटा एई जगह रे एते किछि you can give but we don't have that much time 25 मिनिट रे सारिबार अछि okay तो गला एटा second part ame sarlu how does this doctrine facilitate the admission of otherwise hearsay evidence तापर कोन पचाछि क्वेश्चन रे analyze the limitations and potential challenges associated with applying this doctrine okay limitation and potential challenges माने रेस टेस्ट जेतले आपण अप्लाई करिवे तर असुविधा कोनटा हे पारे especially in cases involving digital and electronic evidence आपण जानचंती बीएसए रो इंपोर्टेंट जिंसटा हला कि सेथरे डिजिटल एविडेंस को आपण इंक्लूड करूचंती ओके तो आगुरु एविडेंस एक्ट रे सेकेंडरी एविडेंस हिसाब रे थिला एबे ताको आपण प्राइमरी एविडेंस हिसाब रे भी देखुचंती ओके सो सेटा आपनकर नेक्स्ट पार्ट आ तापरे किछि आपनको इंडियन और इंटरनेशनल केस लॉज रु ओके एनालिसिस करिया पे कहिछि तो एनालिसिस ऑफ चैलेंजेस भीतर कोन व्हाट आर द चैलेंजेस व्हेन यू यूज दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ओके रजिस्टर सो फर्स्ट वाला एप्लीकेबिलिटी एंड लिमिटेशंस ओके यार पॉइंट्स का मन रखिबे बेसी इंपोर्टेंट वन इज टेम्पोरल एंड स्पेटियल प्रॉक्सिमिटी सो द एक्शंस or statements must be closely related in time which is temporal and space which is spatial okay to the main event statements made significantly later or far removed from the event do not qualify okay तो एटा अंडरलाइन करिवे temporal and spatial proximity time रे आउ space माने कोन distance okay time आउ space रो proximity तापरे number 2 spontaneity okay immediately at the heat of the moment okay in the heat of the moment bhabi chinti ki no spontaneous so the spontaneity of the statement is critical if the declarant had time to deliberate or concoct a story the statement might not be admissible so jodi manipulate kala bhabila kichi okay सेति समय अछि ताहले मे भी spontaneous नो ताहले सेटा admissible न ही पारे ओके ए दीटा बहुत ही इंपोर्टेंट तापर सब्जेक्टिविटी इन एप्लीकेशन सो बेसिकली कोर्ट को डिस्क्रिप्शन सेटा थाए कोर्ट जदी कोर्ट को लागिला कि नहीं कोर्ट सैटिस्फाइड नो ओके कि ए पर्टिकुलर यू नो से जो कहउचंती सेटा गोटे ट्रांजैक्शन रे जीवो बोली सो स्पॉन्टेनियस नो ओके किंबा प्रॉक्सिमिटी नाही तार ओके किंबा अलगा किछि जिंस जोटा कि कोर्ट कन्विंस नो जजेस मस्ट असेस वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रूली स्पॉन्टेनियस and part of the transaction which can lead to inconsistencies okay so subjectivity in application so you know it may vary from judge to judge okay so applications and limitations bhitar seta dela next part ta jo kahithila challenges with digital and electronic evidence the first ta hela apan janchu authenticity digital evidence can easily be manipulated the doctrine's application requires that evidence be proven authentic and unaltered okay so जे गोटे ऑथराइज्ड एजेंसी की ऑथराइज्ड लोक ताको प्रूफ करिवार अछि सर्टिफाई करिवार अछि नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन सो डिजिटल कम्युनिकेशन में लैक द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय इन पर्सन स्टेटमेंट्स लीडिंग टू चैलेंजेस इन इंटरप्रेटिंग द एविडेंस तो डिजिटल कम्युनिकेशन रे ओके तो ताको टिके एनालाइज कला बेलकू ओके इट मे लैक द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जेमति कि गोटे आपण इन पर्सन स्टेटमेंट रे पाइबे सेमति इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट आपन को न मिली पारे ओके तेनु से एविडेंस टा कोन केमिति यूज होबो ता मानेटा कोन ता इंटरप्रिटेशन टा सेटा प्रॉपर्ली न ही पारे then chain of custody very important another point ensuring that digital evidence is properly handled and documented is crucial for maintaining its integrity of the digital okay or electronic evidence माने chain of custody माने सेठू आपनकर धरा हला ओके जो जगह रु आपन ताको नै चंदी सीज करछ ओके तो सेटा अपना जेतोला हमें पढिबा सो इवन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तांको पाखरे बेसी टाइम रेटा रहया कथा नो सेटा जे
फोरेंसिक ओके लैब अच्छी कि जो माने डील कर टेक्निकल साइंटिफिक टीम से रखार अच्छी प्रिजर्व करार अच्छी आउ जो यूज हम ताको एनालाइज करार अच्छी ओके सो चेन ऑफ कस्टडी कहा पाखरे रहउची सेटा डिजिटल एविडेंस टा ओके तो केस लॉस तापर देला इंडियन केस लॉ जीवी राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मदन गोपाल कक्कड़ एंड वर्सेस नवल दुबे एंड अनदर ठीक है आउ इंटरनेशनल केस लॉस आर वर्सेस एंड्रयूज आर वर्सेस ओके गॉडार्ड एटा रिलेटिवली नुआ कहीं ना एटा कहीं दरकार ना रिलेटिवली दिस इज इन रिलेशन विद द information technology or digital communication. So this case emphasizes the importance of context in digital communication, demonstrating the challenges in applying traditional res gesta principle to modern form of evidence. Okay, आउ सबुटु क्लासिक तार जोटा ओके एठी देनी बट आपण भी दे परिबे सेटा दैट इज आर वर्सेस बेडिंगफील्ड ठीक अछि आर वर्सेस बेडिंगफील्ड भी दे हबो सबु जगह एक्चुअली इंटरनेशनल केस लो हमको दबा दरकार नहीं एटा जेतु से पर्टिकुलरली क्वेश्चन रे पचारला so okay directly purchase is a question रे illustrative analysis with examples from India and international case law जदि कोठी किछि पचारनी हमें केवल इंडियन केस लॉ से दबा ठीक अछि तापरे illustrations also if you want you can give 25 mark रो क्वेश्चन तेनु पूरा आपन को डिटेल्स से लिखिया पे पड़ियो a person Mr. A was involved in car accident जोटा कि next problem टा अछि and immediately exclaimed to passerby that another car had jumped the red light and caused the crash. The statement made under the stress of the situation. Man se bhabi ki koi nahi, sange sange कहला. Okay, could be admitted under res gesta doctrine. ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ decide case ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ probabilistic answer ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି. ଏଠି could be admitted. Okay, will be admitted ଟା is not the proper way of writing. Okay, तो एटा भी मन रखिबे. तापर second illustration in a cyber crime case जेतु question देइची okay related to digital communication and other in a cybercrime case an email sent by suspect immediately after committing the alleged offense expressing excitement or confessing the crime might be considered under res gesta provided it meets the criteria of spontaneity and relevance okay spontaneous हेतिबो आउ relevant हेतिबो you know बहुत गुडे cases रे जे परपेट्रेटर गोटे क्राइम करूची सी कोन ना क्राइम कला परे सी गोटे माने निजको जेमति गोटे बड़ देखिया पई सी सब न्यूज पेपर को चिठी पठै दिबो एई टाइप रो जिंस से माने सब करंदी ओके इंदी बहुत एग्जांपल्स अछि ओके देयर वाज दिस यू नो फेमस ब्रिलियंट जीनियस बॉम्बर इन यूनाइटेड स्टेट्स ओके ताकू यूना बॉम्बर बोली कहउतले ओके यूना बॉम्बर कोन ना बेसिकली he was not you know माने गोटे लोनर थिला he was extremely intelligent mathematics और physics और chemistry रे extremely intelligent तो बहुत young age रु बॉम्ब केमती बना हुआ है और बहुत ही बेसिक जिंस रु से बॉम्ब बनेगा जानथिला ओके and he was not happy with society although ताकू से कोनोसी जगह रे ठीक रे चाकरी भी कर पालानी बट नॉलेज बहुत थिला पढिबा बहुत भल लागे तो से सिटी रे रहउतला सिटी छाडी की यूएस रे गोटे गां को पळेला ठीक अछि सेठी सब बॉम्ब्स बनै की different जगह को पठेला मेनली he was not very happy with technology कि टेक्नोलॉजी यू नो ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय कर दोछ ता हिसाब तेनु जो माने सब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट रो प्रोफेसर्स थिले जति येल यूनिवर्सिटी रो जने थिले तो सब तांको बॉम्ब फॉर्म पठेला लेटर बॉम्ब पाइप बॉम्ब जोड़ा एंड 20 इयर्स पर्यंत ताकू यूएस गवर्नमेंट धर पाला 20 वर्ष पर्यंत सी कोन करिवो सी जहा को माने पठेबो बॉम्ब ता आगुरु ओके जनरली ता परे से जो येल रो प्रोफेसर जे ओके से इंजर्ड हे जेतले सेतरे तो तांको पठेला कि आफ्टर दैट बॉम्बिंग कि यू नो यू आर लाइक तुम वाले लोगों को पई सब असुविधा होची ओके सो जदी कि ओटे क्राइम करी की ओके इमीडिएटली ता परे से गोटे किछि चिट्ठी पठौची कि कम्युनिकेट करूची कि एटा मु करथिली कि एक्साइटमेंट देखौची जा बहुत भलो हैला राइट ताले that also will be under this res gesta provided it conforms to the basic requirements of spontaneity and relevance तो ब्लॉक डायग्राम ए टाइप रो गोटे आपण भाबी परिबे 25 मार्क्स में डायग्राम निहाती दरकार 15 मार्क क्वेश्चन ऊपर हेले डायग्राम क्वालिटी के बेटर लॉजिकल डायग्राम हेले भलो
ओके एमती एक्जाक्टली तो आम कर बट आर माने ये जिनसटा थिबा दरकार हमर बेसिक डायग्राम करिवार अछि ओके तापरे सर टू लाइन्स रो कंक्लूजन आपण दे परिबे ओके हां कोंत सर आपण सर 15 मार्क्स रे सर माने एक्सपेक्ट करछन सर डायग्राम होबा कथा 25 मार्क्स तो होबा कथा 15 मार्क्स रे भी हमें सर डायग्राम दबा कथा कहउछन सर 10 मार्क्स ऊपर हेले ओके इट इज बेटर टू गिव डायग्राम टा करिया पई हार्डली 15 टू 20 सेकंड्स लागो डायग्राम करिया मध्ये 2 मिनिट लागेनी 15 टू 20 सेकंड मैक्सिमम बडो डायग्राम करिया ओके करिकि देखंतु तले अपन जान परिया यस सर एबे इनिशियली जो माने प्रिपरेशन करछंदी आपण 5 मार्क रे भी डायग्राम करन ताले कोन ना स्किल टा आपण एक्वायर करजबे ताले आपण जानि परिबे मु कोठी मते डायग्राम करियो अछि तापरे आपण डिस्क्रिप्शन आपण अप्लाई करिवे कि हां 15 मार्क ऊपर पड़ला ताले मु डायग्राम टा देली अदरवाइज टाइम हबन ओके बट एबे फॉर द टाइम बिंग नेक्स्ट 2-3 मंथ्स पई से स्किल टा एक्वायर करिया पई जहां भी जो भी क्वेश्चन अछि आपण डायग्राम बना पे चेष्टा करो ओके सो 2 की 3 लाइंस रो एप्रोप्रिएट कंक्लूजन तापरे आपण देबे ओके ए सब आपनकर ऑलरेडी अपलोडेड हे जाई छै ऐप रे तो जस्ट ताको टिके देखि देबे सेटा क्वेश्चन 1 एवरीवन इज क्लियर ओके क्वेश्चन 2 सही रेस जेस्टा रिलेटेड but it is a problem based question okay question 1 रे कार जति किछ डाउट अछि पचरंतु then I will go to question 2 okay come to question 2 consider a scenario where an individual Mr. Sharma was involved in a car accident immediately after the collision Mr. Sharma in a state of shock रे अछि nepon माने भाबिबार चांस नै okay manipulation रो चांस नै exclaimed to a bystander that he was hit by speeding red car while crossing the road the bystander Mrs. Mehta later reported this statement to the police during the trial. Can Mrs. Mehta's testimony about Mr. Sharma's statement be admitted under the doctrine of res gesta as per section 4 of BSA? Okay, so it a first part ta gala. Second hala, evaluate the admissibility of this evidence taking into account the principles of governing res gesta and the potential issues with relying on statements made under stress or emotional disturbance. Okay, 10 marks ro question achi. Even be 10 marks ro achi आपण गोटे माइंड रे रखिया कथा कि जदि मु गोटे फिगर टे करबी केमती होबा कथा प्रॉब्लम्स रे एक्चुअली फिगर एते दरकार न था तो टू लाइन रो बेसिक एक्सप्लेनेशन देबे तापरे डॉक्ट्रिन के आसीबे so already you have seen that in the first question okay admissibility of the evidence the important points spontaneity and temporal proximity relevance to the main event and state of mind एगुड़ा है important points जोड़ा अपन को देखिबार अछि then again those two maxims again if you have time first maxim टा बेसी important ताको लेखि देले मोर मार्क टिके बढ़िबो राइट तापर से किछटा केस लॉस देछि रिमेंबर एटा गोटे बहुत माने सब एंगल रु देखि गोटे मॉडल आंसर देछि तो ये केस रे कोन आपनकर प्रॉब्लम क्वेश्चंस केस रे हमर केस लॉस दरकार न था तो नाउ कम टू द सिनेरियो एनालिसिस ए जो हम मत गोटे प्रॉब्लम दिया आइथिबो ताको मु एनालाइज करबी दैट इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस ओके तो सिनेरियो एनालिसिस रे कोन होची ना एथरे स्पॉन्टेनिटी अछि कि नहीं फर्स्ट so Mr. Sharma's statement was made spontaneously Mr. Sharma's okay immediately after the accident indicating lack of time for reflection or quotation okay that means भाभी चिंती की किछि हो manipulate करी कहबार समय नटला then temporal proximity the statement was made okay co-temporaneously with the accident which is crucial for its admissibility under the doctrine okay both spatial और temporal proximity एतिबा दरकार तो एठी temporal proximity अछि okay जो समय रे एक्सीडेंट हला जस्ट इमीडिएटली से कहले से जिंसटा then relevance with context the statement directly relates to the circumstances of the accident and provides critical information about the nature of incident okay
तापर potential challenges and issues, so reliability of statements made under stress, ठीक अछि. So सेथरे भी माइंड देखिबार अछि कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, statements made under emotional stress or shock may sometimes be exaggerated or inaccurate. ओके, तो कोर्ट को पुनी satisfy करिया पड़िबो निजोगु कि एटा रिलायबल कि नुह ए टाइप रो ओके स्टेटमेंट गोडा. तो सेटा गोटे जिंस हला. तापर contextual interpretation, the context in which the statement was made must be thoroughly evaluated to ensure its relevancy and accuracy. And chain of custody for digital evidence, এটা digital evidence पे कहले एटी हमर actually digital evidence रो किछि ओके कथा नहीं बुझि परले. सो तार स्ट्रक्चर टा अछि, you remember the structure. ଆଉ एथरे किछि डायग्राम्स हमर दरकार नहीं. ओके, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रे डायग्राम्स हमर दरकार नहीं. Now come to question 3. Critically analyze the provisions of section 6 of VSA which deals with relevance of facts forming part of same transaction. Okay, how does the section expand the scope of admissible evidence beyond the strict confines of facts in issue? It actually section 4 hobo. Okay, relevancy of facts forming part of same transaction মানে এটা section 6 এটা Indian Evidence Act. Okay, সেটা সে ভুল দিয়েছি. section 4 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam সেটা হলো আপনার যেটা পেজেসটা আমি ডিসকাস করছি রেস্ট সিস্টেম. ওকে, তো এটা সেমই হবো যা ফার্স্ট কোশ্চেন থিলা, মোর অর লেস ইট উইল বি দা সেম. ওকে, কিংবা যদি আমি সেকশন 6 রে কোন আছে সেকশন 6 অফ ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম. ওকে, যদি আমি সেমতি দেখিবা সেকশন 6 কু নবা তাহলে সেটা মোটিভ ওকে প্রিপারেশন তা উপর সাঙ্গে ডিল করছি যদি সেটা হবো, বাট ইট ডাজ নট ডিল উইথ রেলেভেন্স অফ ফ্যাক্টস ফর্মিং দা পার্ট অফ সেম ট্রানজাকশন. ହେଲା সেটা ହେଲା ইন্ডিয়ান এভিডেন্স আক্ট রে থিলা সেকশন 6 রে. এটি সেকশন 6 রে আপনাଙ୍କର মোটিভ উপরে ଅଛି. তো ধরନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଟିଭ ଉପରେ ହିଁ କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବି ମୋଟିଭ ଉପରେ ଅଛି. ଓକେ, ସो 1 କି 2 ଲାଇନ ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେବେ, ଦେନ୍ doctrine of motive, preparation and conduct under section 6 এটা লেখিবার ଅଛି. Section acknowledges that understanding an individual's motive, the preparation they undertook and their subsequent conduct can provide essential insights into their intentions and actions. It enables the admission of evidence related to these aspects even if such evidence does not directly prove main issue but provides context or explains action. Okay, so requirement kon thila, how does the scope section expand the scope of admissible evidence beyond the strict confines of facts in issue? Discuss the potential challenges and implications of applying this section in cases involving complex transactions or events, particularly in digital or cyber environments. Okay, tapare case law dabar achi, but it is about the same transaction likhichi. Basically it is related to res gesta. Okay, res gesta upare se korchu, but since section 6 deji, so we will go according to section 6 of BSA, which is motive, okay, preparation and conduct. Okay, there are legal maxims, that is first ta hi apan dei paribe. Okay, second ta if you have the time you can go for that, right? So जो parts guda se कहला underline ame करथिलु, expanding the scope of admissible evidence. Okay, so beyond fact in issue, section 6 expands the admissible criteria to include facts that may not directly pertain to immediate question in issue but are relevant for understanding the entire context. Okay, evidence of motive can illuminate why an individual may have acted in certain way, while evidence of preparation can indicate a premeditated plan. So illustration daro dela, if a defendant is accused of theft, evidence showing their financial difficulties, that is motive, or purchase of tools used in crime, that is preparation, can be admitted to establish link in the crime. In a murder case, previous threats made by accused or evidence of buying a weapon could be relevant under section 6. Okay, challenges kon ethere. So the application of section 6 to context of digital or cyber environment is complex, as digital evidence may include wide area of communication and data trails. Determining the relevancy of digital communication such as email or chat logs in showing motive or preparation requires careful consideration of their context and timing. Okay, तो सेटा भी पुनी clean हेतिबा दरकार, without any tampering हेतिबा दरकार. Okay, ଆଉ तारा proper analysis mainly technical expert through दरकार हबो. Okay, issues of authenticity and contextual relevance. So ensuring that
authenticity and integrity of digital evidence is crucial as it can easily be manipulated. Okay, तो hackers माने कि जे आपण digital evidence को manipulate कर दे परिवे तेनु court सेटा admit केमती करिवो. Okay, so to be admissible, court has to be absolutely sure that it is in pristine form. Okay, पूरा pure form रे अछि किछि सेतरे tampering करिका हेइनी. The context in which digital evidence was created or sent must be accessed to determine its relevance to motive or preparation. तो misrepresentation भी पर एबे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की चैट्स उड़ा बहुत जगह रे मिसयूज होची इवन कोर्ट रे भी भूल जिनसड़ा देखाउची. ओके सो द कोर्ट इज वेरी वेरी केयरफुल ताको जो व्हाट्सएप रो इंफॉर्मेशन गरिका कि फेसबुक रो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया रो इंफॉर्मेशन कोर्ट ताको ओके डबली चेक कला परे ही based on that se mane kichi action nouchanti. The broad scope allowed by section 6 can sometimes lead to inclusion of evidence that may only have a tangential connection to the main issue. Okay, tangential mane बहुत close nuhu. ठीक अछि तो a type of collateral connection but not direct connection, tangential connection, raising concerns about prejudicial impact. Okay, then case laws अपन नहीं परिवे थरे. So that is चारटा तीन चारटा case laws एटी देची. That is Nathani Yadav versus State of Bihar, Bhagwan Das versus NCT of Delhi, Sunil Kumar versus State of Haryana. Okay, it's actually तीनटा हमर गोटे केस रो लिखियर अछि एक्चुअली. आउ concept diagram गोटे ए टाइप रो दे परिबे. ठीक अछि. एठी हम चित्र तो हमर करिवर नै. हां गोटे हमें डायग्राम सेंट्रल सर्कल टा कर देलो. ओके आउ तापरे ओके ए जोड़ा that you can just write. Okay, for example conduct लिखिले. Okay, challenges लिखिले तो सेगुड़ा in that way you can give a concept diagram. ठीक अछि. Question 3. So go through question 3. Any doubts in this question 3 टा? Okay, सेटा मन रखंतु. सी जो प्रथमे जो जिंसुरा कहउची कि section 4 related, okay, section 6 related, okay, and तापर कहउची relevancy of facts forming part of the same transaction सेटा भूल. Okay, एटा motive BSA रे 6 हला motive. Okay, से IE रो 6 को धरिची. बुझले तो. And anyway, हां सर जदि हम सर क्वेश्चन 2 को जदि आसीबा सर से जो माने जो स्पेशली जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दा अछि सर सेठी सर गोटे जिंस मु एठी बुझी पाउनी सर एठी स्पॉन्टेनिटी टा विषय तो कोठी लिखा है नि सर ऐसे खाली कहछि इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन मिस्टर शर्मा वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक से सिया कहछि तापर एटा तो कहनी जे 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 बाइस्टैंडर अछि से कहछि ही वाज लेटर रिपोर्टेड द इन स्टेटमेंट टू द पुलिस तो से इमीडिएटली सर इमीडिएटली इठी माने माने एटा मु टेके डाउट होउची सर ता माने सर इठी जो टाइम और स्पॉन्टेनिटी को जो दीटा मेन फैक्टर इठी केमती ने कोरिलेट करियो सर. It was very clearly immediately after the collision, Mr. Sharma, in a state of shock, exclaimed to the bystander. Mane immediately after the collision, he exclaimed to the bystander. He was in a state of shock. And he exclaimed to the bystander that he was hit by a speeding red car. ताने सर से बाइस्टैंडर को से कहि छी कथा सर. लेकिन तो एटा क्वेश्चन. ओके 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 ओ सर मु सेटा टे बुझी पारलिनी जे सेटा हला कथा मु माने भाबु छी बाइस्टैंडर एटा निजे माने काई एटी इमीडिएटली कहि छी बोले मु एटा मु बुझी पारलिनी मु भाबली एटा बाइस्टैंडर को नेना छ. ओके ओके सर. So section 3 or question 3 टा सेटा जस्ट रिमाइंडर रखिए. You just consider it as section 6, that is your motive, okay, and conduct. Now let's see जोड़ा दीजिए सेटा से section 6 IE को initially first part at least okay सही हिसाब रे थेला. बाकी क्वेश्चन उड़ा section 6 of BSA हिसाब रे से दीजिए. Done. Now come to question 4. Critically evaluate the role of motive. तो एटा पुनी again section 6 आपण आसीगला BSA रो. Critically evaluate the role of motive preparation and subsequent conduct under section 6 of BSA in establishing the relevance of evidence. How does this section distinguish between admissible and inadmissible evidence? Okay, admissible evidence, inadmissible evidence with a differentiate केमती करिवो when it comes to proving motive and preparation. Discuss the challenges in applying these principles to modern day cases involving complex financial crimes. तो सेठी information technology computers related एतला IT financial crimes पचाउछ.
where motive and preparation may be inferred from electronic communication and transactions. Provide examples from Indian case laws to support your analysis. Okay, so motive, preparation of subsequent conduct, which are the basics of section 6. ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି. ତାପରେ legal maxim again, ଏଠି legal maxim ପାଇଁ ମତେ time ହବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, but still if I want to one first one I can give. Okay, then admissibility criteria under section 6. So kind of say ପଚାରୁଛି ନା admissible ଆଉ inadmissible evidence ଭିତରେ discriminate କେମିତି କରିବ. So admissibility criteria under section 6. Okay, so relevance to the main issue first ଜିନିଷ ରହିଲା, then temporal proximity and context and connection. Are you whether it would be admissible or not, court will decide that. Then kisha illustrations भी देला. In a murder case, evidence of accused purchasing a weapon and making threats against the victim can be considered under preparation and motive. In a fraud case, evidence of accused sudden acquisition of large sums of money after a fraudulent transaction can demonstrate subsequent conduct. So challenges in modern day cases. तो जोड़ा कहला financial cases जोथरे की प्राय सबू records जोड़ा आपन electronically रखा होची. Okay, so electronic communication and transactions. So सेथर issues कौन होची? Okay, interpreting this communication requires careful consideration of the context and authenticity. Okay, तो legal आपनकर knowledge छड़ा आपनको expert knowledge भी दरकार related to communications, related to computers, etc. Then volume and complexity of data. कहीं ना आपनो जो data टा बाहर करिवे और analyze करिवे, that would be, you know, like a needle in the haystack. बहुत गुडे information थिबो, ता भितरु हमको हम particular information बाहर करा अछि. It takes a lot of time. So financial crimes often involve complex transactions and large volume of data, making it challenging to pinpoint specific actions or statements that indicate motive or preparation. Okay, out tapare chain of custody and integrity of evidence. Eta बहुत important. Nale compromise हे pare. Okay, integrity of electronic evidence. Then misinterpretation bhi हे pare. The broad inclusion of evidence under section 6 can sometimes lead to admission of evidence with limited relevance, potentially, okay, prejudicing the court or the jury. Clear guidelines and judicial discretion are essential to balance probative value against potential prejudice. Okay, so again, common cases अपन say previous question sangare. Okay, Nathuni Yadav versus State of Bihar and Bhagwan Das versus NCT of Delhi. Sunil Kumar versus State of Haryana. So basic gote a type of concept diagram अपन दे परिवे. Okay, and 2 lines maximum, 2-3 lines of conclusion. जहाँ अपन लिखी चुनती just to conclude and to show the way forward. Okay, so this is question 4. Now come to question 5. Eta bhi 25 mark question. Section 12 of the BSA addresses the relevance of facts showing the existence of a state of mind or body or bodily feelings. Critically evaluate how this section impacts the admissibility of evidence related to mental states such as intent, motive, and emotion in criminal proceedings. Eta first koila. Okay, how this section impacts the admissibility of evidence. Section 12. Second part Koji, discuss the challenges and limitation of proving a defendant's state of mind using such evidence, particularly in cases involving crimes of passion or premeditated action. Aguru se plan kariki achu, premeditated action nahi. Okay, so how can the courts ensure that evidence presented is reliable and does not prejudice the jury or the judge? Provide examples from Indian case laws to illustrate your arguments. Okay, so it is section 12. So for the scope ta upon likhe 2 lines of basic introduction. Jetole apna analyze koruchandi model answer ko tapare dekhi debi introduction ta kemti kon lekha hochi. Okay, so sei type re chesta karibe taku lekhiya pai. So important parts ko asile scope of section 12. So section 12 permits the inclusion of facts that demonstrate a person's state of mind, body or bodily feelings at a relevant time. This includes evidence that may indicate intent, motive, or emotions, which are often critical in understanding the context of an alleged crime. Okay, so segura bhi sabu danti, it may indicate intent, motive, or emotions. Okay, tapare legal maxims if you have time.
you can mention these. Maximum gote kale chalibo seti dita dechi apanako knowledge ପାଇଁ. Okay, model answer is basically it gives you a direction. Exactly model answer भलिया लिखिया पे चेष्टा करिवेनी. स्ट्रक्चर टा सेमति रखिबे, कंटेंट टा आपन जहा मने पडला कि आपन जानचंती कि जो जति कि समय भीतर आपन सारी परिबे सेति कि रखिबे. Okay, impact on admissibility of evidence. So evidence of mental states, so intent and motive. So evidence that shows the accused has a specific intent or motive can significantly impact the outcome of a case. For example, evidence of prior threats can indicate a premeditated intent. आगुरु कहितला मार देई बोली तापर जाई मार देला. ओके ता माने आगुरु से प्लान करछि ता ऊपर. Then emotional states, evidence demonstrating the accused emotional states such as anger, fear, distress can be relevant, particularly in crimes of passion where emotions may play a pivotal role. Okay, so jane jodi the road rage incidents re in the murder he jauchi. Okay, for example, let's say gote road rage incident, gote loka gote stranger ku okay se taku for example se gaadi re chalaila kichi ye taku overtake kar dela kon gote problem hala se jaiki taku okay cut kariki ta gaadi agare ta gaadi rakhiki jaiki taku okay gote let's say gote marila taku gote चटकांडा मारला आ पाखरे वेपन थिला ये गन रे ताको शूट कर देला एंड ही डाइड. ठीक है, तो से को स्टेट रे क्या ये जो आसी की ताको प्रथमे बाडे छी. ओके कि किछि बाडे की थ्रेटन करूची कि तुम गाड़ी रे पिला माने बसछन समस्त हार्म करबी तो सी को इमोशनल स्टेट रे थिबो. सो एविडेंस डेमोन्स्ट्रेटिंग द अक्यूज्ड इमोशनल स्टेट सच एज एंगर, फियर और डिस्ट्रेस कैन बी रेलेवेंट. तामे से डरी की मारछि देखो. ओके ता पूरा फैमिली अछि. ठीक है, तो जमती सेल्फ डिफेंस करिका. ओके सेगुड़ा when we go to the particular aspect we'll study that, particularly in crimes of passion where emotions play a pivotal role. ठीक है, तापरे in case of a murder, if the accused has previously expressed hatred towards the victim, this could be presented as evidence of motive under section 12. In a case involving sudden provocation, evidence showing that accused extreme emotional distress at the time of the incident could be crucial in understanding their mental state. Okay, सेटा premeditated नथिला जेंते एई केस रे तो जानि नि ताकू से आसी कि ताकू थ्रेटन कला ता गाड़ी की भांगे देला कि बाडेला जाबी. सो से भाबिला कि ये बोधे मो फैमिली की हार्म करिवो तो ये ताकू फायर कर देला. ठीक अछि, एठी प्रीमेडिटेशन किछि नथिला, से चिन्हि भी नथला ताकू. राइट, सो सडन प्रोवोकेशन अंडर एटा हला. तो challenges or limitations कौन ना, how to prove mental state, it is very difficult because it is very subjective in nature. Okay, proving a defendant's mental state is inherently subjective and challenging. It often relies on circumstantial evidence which can be open to interpretation. गोटे जज जदि तो गोटे प्रकार देखिबा आ गोटे जज आ गोटे प्रकार देख परत, सब्जेक्टिविटी रहउची. ओके एतरे बहुत ऑब्जेक्टिविटी रहिबार चांसेस कम. राइट, देन प्रीजुडिशियल इंपैक्ट. There is a risk that evidence related to mental states may unduly prejudice the judge or jury. Okay, it's our jury nahi or judge. For example, presenting evidence of prior mental health issues may lead to biased assumption about the accused's character. ठीक है, so तापर next point है ना ensuring reliable evidence. तो first तो है ना जहाँ भी evidence आसिला ए हिसाब रे ताकू corroborate करा हो. So corroboration. Okay, so जनक state of mind जहाँ भी अछि तो ताकू corroborate करा हो कि से आगुरु भी एमती थिला. ओके कि आगुरु ए टाइप ऑफ बिहेवियर से देखो थिला. फॉर एग्जांपल, testimony about accused state of mind might not be supported by other evidence such as communication or witness statements. तो ता कलीग्स में ऐसी कोई भी नहीं, सी पूरा नॉर्मली ऑफिस से काम करे, नॉर्मली कथा हुए, किछि ए टाइप रो जिंस किछि नहीं. ओके, सो corroboration would be required. तो एठी corroborate ही परलानी. Okay, then judicial instructions. So judges play a crucial role in instructing juries on how to interpret evidence of mental state, ensuring that they consider it appropriate legal context and do not let it unduly influence the decision. Okay, it is a jury system अछि हम पे एटा important no. तो landmark cases, okay, that is the jury कथा में जो कोटलु के नानावटी versus state of Maharashtra, okay, Gurcharan Singh versus state of Punjab, और recent cases भितरे आपनकर state of Madhya Pradesh versus Pappu. Okay, ओके आउ तापरे बेसिक डायग्राम ओटा करिवे. एठी खाली जोटा जरा लेखा हिची
सेगुडा थ्रू एरोज आपन को दबार अछि ओके एटी ब्रेन आ आपनकर यू नो सेगुडा सब डिफरेंट डायग्राम्स और मोटिव्स सेगुडा तो आपन कर परिबेनी बट जहा लिखाई छी और से स्ट्रक्चर ता आपन करि परिबे जस्ट थ्रू एरोज एंड ओके टेक्स्ट आकु कोंती कांसेप्ट डायग्राम उडा हमर जहा बेले दरकार हम मार्क्स बढ़ेबो सेटा तापर टू लाइन रो कंक्लूजन आ ऊपर आपन दे परिबे ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 6 लास्ट क्वेश्चन section 15 of BSA defines admission and outlines the circumstances under which such admissions are relevant in legal proceedings. Analyze how this section affects the evidentiary value of admissions made by parties in both civil and criminal cases. Discuss the challenges in distinguishing between an admission and confession. So, ame dekhithulu seta ki all okay confessions are admissions but not the other way around. ठीक है. So, especially in context of statements made to law enforcement officers, police officer. तो इटा तो actually टिके परे अछि कोडिए परे अछि एटा okay but still then question आछि तो we can answer that. How does the law safeguard against misuse of admissions and what are the implications for the rights of the accused? Provide examples from Indian case laws to illustrate your points. Okay, so again 2 lines introduction. Definition and scope of admission. So section 15 re apno admission define karaichi. Relevance, okay, what is the importance of admissions? So admissions are relevant under section 15 when they relate to any fact and issue or relevant fact, thereby impacting the decision making process in both the civil and criminal cases. Okay, so maxim b, okay, first maxim that you can give. Evidentiary value of admission in civil cases, it is of binding nature, and partial admissions, even partial admissions can be crucial, okay, in civil cases. Criminal cases re admission versus confession eta ro tike pore ame dekhiba jetole ame confessions ko jiba to edra bahut gude points achi, around 15 points achi differences between admission and confession re, okay, but jehetu deichi question re to eti gote di point ame lekhi dei pariba. While admissions can be used as evidence, they do not carry the same weight as confessions, which are direct acknowledgements of guilt. The distinction is critical as confessions are subject to stricter scrutiny. Okay, tapre voluntariness. So admissions, admissibility of admission depends on their voluntariness. Any admission obtained through coercion, okay, inducement or undue influence is generally inadmissible. Okay, generally inadmissible. ठीक अछि तो किछि जगह रे कोन ना आपनकर जेमति कि हम देखिलु certain things which a person should not have admitted से ताको admit करूछ. Okay, कहना से जानी नहीं कि सेटा record होउची कि सेटा ता against रे use हबो. तो in those cases, okay, कैसे voluntarily कहिछ कि ओटे drunk state रे कोन कहिछ कुछ पहले तो सेगुडा हो एथरे आसीबनी but voluntariness is required. Okay, से ता आडू से तार admit करिबा कथा ना कि किछि प्रलोभन देखि जंदी आपण inducement, okay, किंबा किछि undue influence ऊपर पकाइछि threat दिया आइछि ताको, okay, promise कराइछि तुम या कहि दियो केस रिलेटेड और तापर हम तुमको छाड़ देबो कि whatever. Okay, illustrations in a civil dispute of property, if a party admits in writing to certain facts about ownership, the admission can be used against them in court. In a criminal case, if a accused admits to be present at the scene of crime but denies involvement, this admission may still be relevant to establishing their presence. So tapare challenges kono in distinguishing admissions from confession jota question pachatla. So to the context of statements to the law enforcement officer, police ko kon apna statement deychandi, statement made to law enforcement officers must be carefully scrutinized to determine whether they constitute an admission or confession. The circumstances under which statement was made, including whether the individual was in custody or under interrogation, are crucial. Okay, kahi na jodi apna law enforcement police officer ko apna confession you know करचंदी ताले तार value, evidentiary value बहुत किछि नाही. Okay, so that is confessions to a police officer pore seta अछि कोडिए pore अछि seta, right? Then misinterpretation risk, there is a risk that admissions may be misconstrued, okay, and as confessions, particularly if the language used is ambiguous or the statement is taken out of context. So misuse ko kemti prevent karabo, safeguards. So legal protection is there, okay, so that admissions are not misused, particularly in criminal cases. Okay, so एथरे कौन कौन अछि ना voluntariness सीता निज इच्छा रे दबा कथा, and exclusion of evidence obtained through coercion or inducement. लोभ देखि कि डर देखि कि जदि okay
you have obtained any kind of evidence, that will be okay excluded, right? Then judicial instructions. Judges play a key role in instructing juries in the proper use of admissions, emphasizing that admissions do not necessarily equate to confessions or guilt. Okay, तो हमारे ठीक jury system नहीं. So landmark case laws then Narayan Bhagwat Rao Gosavi, Balaji Vare versus Gopal Vinayak Gosavi, and State of Punjab versus Bagh Singh. Okay, Rajkumar Karwal versus Union of India. These are important case laws. Any one case law you can pick up and ता ऊपर दी लाइन लिखिबे. Okay, ଆଉ ତାପରେ then the concept diagram you can give. Concept diagram is quite important. ठीक है तो एमिति तो हमें diagram करिबानी हमें जोड़ा खातारे लिखि हबो जा खातारे बनै हबो but concept या रहबो. Concept या रखि मु गोटे simple diagram बनै पारि. Okay, so you take your time. Can I just after you finish the exam 5 minutes भितर ही मु ताको upload कर देली. So after this discussion you go to your personal notes. Okay, see the model answers in detail. देखंतु आपण आउ कोन ऐड करि परिबे बेटर. मॉडल आंसर एमति नो कि सैक्रोसेंट एंड गोटे बेस्ट परफेक्ट. ओके आउ ताको इंप्रूव करि होबनी सेमति किछ नै. ता दरे आउ कोन रिक्वायरमेंट हमें आउ कोन ऐड करि परिबा. दैट आल्सो यू कैन थिंक एंड यू कैन मेक योर आंसर्स बेटर. ठीक अछि. तो एटा हला हमरो सेक्शन 1 to 20. काली हमें प्रीलिम्स रो टेस्ट देखि दिलु 50 टा क्वेश्चन. आज मेंस रो टेस्ट 6 टा क्वेश्चन दैट वी हैव सीन. ओके, so only Wednesday is holiday, so Thursday again we will continue. Okay, any doubts in these questions or your approach? बहुत जण लिखिछन्ती कि हमें सारी पारलुनु. तो फेयर इनफ, किछि असुविधा नै. सारी पारलेनी त माने आपण जानले कि मते जदी 120 मार्क रो टेस्ट दिया गला. ओके, प्रोसीजरल लॉ रो जोटा कि 120 मिनिट रे मते सारीबार अछि, ताहले मते को स्पीड रे लिखिया पड़िबो. ओके, 1 minute for 1 mark. 25 मार्क क्वेश्चन प्राय थिला, किछटा 10 मार्क थिला, तो 120 मिनिट्स मते पेपर सारीबार थिला. ठीक अछि. सो डोंट वरी कि मते मु भलो कर पाली न कर पाली. एबे 3-4 months दिस इज द बिल्डिंग फेज. ओके, बट राइट लेखंतु सेटा बेसी इंपोर्टेंट. ओके, आपण लेखिबेनी खाली मॉडल आंसर ता पढी देबे. हां एटा क्वेश्चन एटा आंसर सेमिति किछि लाभ होवर नै. ठीक अछि. तो सेमिति किछि लाभ होवर नै. यू हैव टू राइट. हां एमति ए पर जो पूरा फर्स्ट टू स्टार्ट करूचंदी आ सीधा लिखि परिबेनी. आपण मॉडल आंसर देखि पढ़ी सारला परे तापर लेखंतु, किछि असुविधा नै. तेतरे आपण राइटिंग स्किल्स आ राइटिंग स्टैमिना टा आस्ते आस्ते बढ़िबो. काहे कि ना देखंतु आपण को 5 घंटा लिखिया पे पड़िबो जो दिन इंग्लिश और प्रोसीजरल लॉ अछि. ओके, 150 मिनिट्स और डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शनल कॉम्बिनेशन आपण को मे बी 3 घंटा भी लिखिया पे पड़ी पारे. जदि आपण एमिति दीटा ऑप्शनल नै चंती जोटा सेम डे रे पडुची, ताले आपण 3 6 घंटा लिखियो गोटे दिन रे. कुछ पहले तो तेनु राइटिंग स्टैमिना इज वेरी इंपोर्टेंट. तो सेटा बिल्ड करिया पे आस्ते आस्ते यू राइट. जहा भूल हो, ग्रामेटिकल एरर होची, टाइम रे सरुनी, किछि असुविधा नै, बट यू राइट. लेखिबा प्रैक्टिस टा कंटिन्यू रखिबे. ओके, आ सेथरे भी आपण जानि परले. तो आजी विद इन 2 hours 6 टा क्वेश्चन जगह रे मु मात्र 4 टा कर परली कि 3 टा कर परली. ओके, नेक्स्ट वीक रे मु सेटा 4 टा कर परिबी. ता नेक्स्ट वीक रे 5 टा. आउ 2 वीक पर पूरा 6 को जो मोर 120 मिनिट्स से कि जेति टाइम मत दियाला ता भीतर हे जो. बुझ परछन. सो कीप दैट इन माइंड. अब की कोन पछरथिले? सर आउ गोटे जोटा मेजर प्रोब्लेम सर होची जति भी आमे गोटे जिंस विषय रे जति भी आमे पूरा पूरी सब जिंसटा जानि छी सर. एक्चुअली एमिति बेले बेले लागु छी सर रेलेवेंट सब जिंस ओडा रेलेवेंट लछि, किंतु सब जिंस तो सर लेखि होबनी एते लिमिटेड टाइम भितर. तो सीधा जो सिलेक्शन करियाटा टी सर प्रॉब्लम होची सर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो फंडामेंटल जिंस मन रखिबे, स्पेशली रिटन एग्जाम रो, कि यू हैव टू राइट व्हाट इज आस्क्ड, नॉट व्हाट यू नो. आपण को परीक्षा खाता रे सेति कि लिखिबार अछि जेति कि पचारछि. आपण कोन जानि चंती सेटा लिखिबा दरकार नै. बुझ परले तो सेटा गोटे जिंस माइंड रे रखिबे. दंतु मु ओके 3-4 टा बही पढिछि. ओके, बीएसए ऊपर कि एविडेंस एक्ट ऊपर माने रेस जेस्टा ऊपर 50-60 पेज पढिछि. ऑलमोस्ट गोटे बही पढि दिछि रेस जेस्टा ऊपर. एते गुडे केस रो जानिछि और एते गुडे एंसिलरी पॉइंट्स जानिछि. एबे कथाटा हला से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पचारला कि रेस जेस्टर ओके बेसिक प्रिंसिपल्स उडा कोन. जेमति हमें देखिलु आपण लिखियो सेडे स्पॉन्टेनिटी थिबा कथा,
ओके तापरे टेम्पोरल आउ स्पेटल ओके आपनको प्रॉक्सिमिटी थिबा दरकार द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी ओके सेटा की सेटा ये करतला हु ब्रॉट इट ओके जस्टिस एटकिन सेटा से कहतिले ओके तांकर यू नो बहुत गुडे केसेस रे and also you will find that in R versus Bedingfield and other cases ठीक अछि तो मु सेगुडा भी पढी किंतु मु को लिखिबी सेटा सेठी कि ये जो प्रॉक्सिमिटी ओके स्पैटियल प्रॉक्सिमिटी आउ आपन टेम्पोरल प्रॉक्सिमिटी तांकर एई जजमेंट रे ए जज एया कहिथिले तो मते समय नै मु एति कि लिखिबी कि सेठी ओके these two types of proximity is required plus आपन स्पॉन्टेनिटी दरकार रेलेवेंस दरकार ठीक अछि जहा जति कि मते पचारिछि सेति कि लिखिबी जो इनसे पचारनी ताको लिखिबी काहे कि ना जहा पचारछि ताको मु बेटर लिखि परि ता ऊपर गोटे मैक्सिम दे देबी ओके ता ऊपर गोटे डायग्राम कर देबी गोटे इलस्ट्रेशन दे देबी मते मार्क बेसी आसीबो पिला कोन करंती एंसिलरी जिंस लिखंती ओके तो सपोज आपन पचारला गोटे जगह कोठी आपन लिखिबे से जगार चारि पटे एया अछि ठीक अछि तो अरे से जगाडा कोठी मते प्रथम लिखिबार अछि सेटा बुझ परछन तो तनु सेथे टाइम पड़े जस्ट राइट व्हाट इज आस्क्ड ताले ठीक टाइम रे भी आपन सेट परे हां सेही पॉइंट ऊपर आपन और वैल्यू एडिशन करंतु डायग्राम गोटे कर देले मैक्सिम दे देले ओके केस लॉ देले ताले ठीक अछि बट अनरिलेटेड जिंस किबा एंसिलरीली कोलैटरली रिलेटेड जिंस ऊपर जदी आपन बेसी फोकस करिवे समयटा पळेबो आपन बुझ परछन सो जस्ट राइट व्हाट इज आस्क्ड गोटे पॉइंट रे लिखिबे से पॉइंट रो गोटे की दी लाइन रो एक्सप्लेनेशन देबे बस एति सर ताले ता माने सर गोटे जिंस एटा माने ताले सर आपन क्लियर करले जे बेसी आंसर को वॉल्यूमनस करिवा दरकार नहीं इट इज टू द पॉइंट लिखिवार अछि सर टू द पॉइंट माने स्केलेटल होबा कथा न गोटे यस पॉइंट लेखार तार दी तीन लाइन एक्सप्लेनेशन हबो मु खाली गोटे गोटे पॉइंट लिखि देबी सिविल सर्विस रे हम जेंति लिखुछु तार रिक्वायरमेंट आ जुडिशियल सर्विस ओडिशा जुडिशियल सर्विस रिक्वायरमेंट अलग ठीक है सर तेणु आपको एक्सप्लेनेशन टिके दवा ପାଇଁ पड़ियो मु एमति कोनी गोटे पैराग्राफ गोटे पेज लिखि दियंतु किंतु गोटे पॉइंट रे तीन लाइन तो मु एक्सप्लेन करबी ताको जिंसडा कोन ओके खाली हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखि देले हबनी एटी एक्सप्लेनेशन टिके करिया ପାଇଁ पड़ियो यस सर किंतु कोन एक्सप्लेन करबी जहा पचाची क्वेश्चन रे नॉट समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू इट ओके मोर धरतु क्वेश्चन पचाची बहुत डायरेक्टली गोटे पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स से काली हमें कि पर दिन हमें देखथिलु डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन काली भी जो मु क्वेश्चन टा देइथिली पर दिन लिखिया पे तो लिखा हितला कि इफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज इनकम्प्लीट ओके ताले कोन हबो यदि इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन रहबो अच्छा सेथरे मु पॉइंट पसेली कोन ना एफआईआर टा भी परिबो डाइंग डिक्लेरेशन ठीक अछि आउ चार पांचटा पसै देली पॉइंट डाइंग डिक्लेरेशन रिलेटेड ठीक लिखिछि सब किंतु सेठी पचराई गिनी से पचाउछि इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन टा एडमिसिबल की नहीं ओके आउ गोटे इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन कोन ओके तार कोन सब रूल्स अछि तार टेस्ट कोन अछि सेटा मते लिखिବାର अछि जहा पचर सेति लिखि बुझछन तो इफ यू स्टिक टू दैट ताले आपण किछि प्रॉब्लम आ सेहिति पई क्वेश्चन मिलु मिलु directive words and what is expected should be written okay analyze how this section affects the evidentiary value of admissions made by parties in similar civil and criminal cases मु खाली जनरली लिखि देबी सबले मन रखिबे जहा रिक्वायरमेंट देइछि क्वेश्चन रे मु सेही भाषा रे लिखिबी से एग्जैक्टली मॉडल आंसर से करछिले से लिखिला सिविल केस रे कोन होबो ओके आउ क्रिमिनल केस रे कोन होबो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन इन सिविल केसेस इन क्रिमिनल केसेस एही जो से को स्ट्रक्चर टा जदी आपण बुझी गले तापर कंटेंट आपण निजर दे परिबे पढला परे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स ठीक अछि किंतु जने ताको खाली गोटे 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 दी तीनटा पैराग्राफ रे टोटल 5-6 पेज लिख दिछन ओके ताको डिस्क्रिमिनेट करनांती भलो रे ताको सेक्शनलाइज करनांती भलो रे ताले मार्क्स कमी जिवो मोर ओके Yes, sir. एनी अदर Yes. क्वेश्चंस
सर आमर तो सर जो जेमती कि सर प्रिलिमिनरी रे जेमती हेतला कि से माने अब जेतला सर मु देइतिली से एबे जो देइतिली सर तांकर से माने तांकर उटे क्लॉक रखितले से माने कहले सेही क्लॉक टाको फॉलो करिले सर सेम थिंग बोदे इट मेंस वर्क को भी सेही सेम जिंसरा करियो बोदे मते कारण मु सेही समय सर मु उटे हैंड वॉच नेक ना जाइतिली सर सेटा डिजिटल नथला ए मैनुअल टाइप रहितला तो सेटा खाली 4 मिनिट रा तफात आसुतला मोर आ तांकर ये भितरे तो आम से जिनसा सेठी भी जिनसा तो सेठी फॉलो हो मेंस रे ଆପଣ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ ହିସାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ओके ओके सर ହୁଁ यस सर ଓକେ ଫାଇନ୍। ତ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ କେହି ତ ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ କରି କରିକି ଶିଖିବା। ବଟ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆମକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। କୋର୍ସ ସରିଯାଉ ପୁରା କୋର୍ସ ସାରିଦିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଲେଖିବି, କେବେ ନୁହଁ, ସେଟା ହୁଏନି କେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛିଟା ସେକ୍ସନ ସରିଲା, 10ଟା ସେକ୍ସନ, ମୁଁ ତ 20ଟା ସେକ୍ସନ ସରିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ତାର 50ଟା କି 100ଟା MCQ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଛି ତାର ଓକେ वी विल बी हैविंग द वीकली टेस्ट ସେଟା ରହିଲା। ତ ସେଇଟା ସବୁ ପେପର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ ଡୋଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଫର ଦ ଏଣ୍ଟାयर ପେପର ଟୁ ଗେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ନା। ଆପଣ 5ଟା କି 10ଟା ସେକ୍ସନ ପଢିଲେ ଓକେ କି ରୁଲ୍ସ ଅର୍ଡର୍ସ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ତ ତା ଉପରେ କଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ଓକେ ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍। Excuse me, sir. डोंट रेज योर हैंड डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन। ओके ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ PDF ରେ ଥିବି ନା କି କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରୁଛି କଣ କରୁଛି ମତେ ଜଣା ପଡିବନି। ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆସ୍କ ସମଥିଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟ ଅନମ୍ୟୁଟ ଏଣ୍ଡ ଆସ୍କ। Sir, answer ପଚାରନ୍ତୁ। model answers. We can mention the previous statute, the old statute, the section which was there earlier. Yes, if you No, have sir, studied from the it, relevant. Huh. ଯେମିତି କି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣ ଲେଖିବେ which was section 6 in Indian Evidence Act ଲେଖିପାରିବେ। Okay. I mean, we can follow this in all the answers, na, sir? ହଁ you can Like, follow, does but what that is the shows an necessity of it? impression or? Okay. Hmm. Okay. See, ଦି ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଓଲ୍ଡ ଲସ୍ କେବେ ଆଉ ପଢିବେନି, ସେମାନେ ସିଧା ନ୍ୟୁ ଲସ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ କଣ ଥିଲା। ଓକେ ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ପଢିଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ ଇଜ 99% ସେମ୍, 1% ଯାହା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଓକେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ତ ସେମ୍ ରହିଲା ନା, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି you know which was our corresponding section 6 of Indian Evidence Act ସେମିତି ଲେଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Okay, sir. anyone else, any other questions you have? Excuse me, sir. କୁହନ୍ତୁ। Sir, Thursday ଦିନ ଆପଣ classroom ରେ ଆସିବେ କି? ଥର୍ସଡେ ଦିନ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି। ରାଣା ସାର୍ଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଅଛି, ଆଉ ଅଭିଜିତ ସାର୍ଙ୍କର 4ଟା ବେଳେ ଅଛି, ମୋର 6ଟା ବେଳେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଥର୍ସଡେ ଆଜ୍ଞା ମୋର 6 to 8 ଅଛି କ୍ଲାସ। ତ ଥର୍ସଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ସାଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ସେ କ୍ଲାसेस ଗୁଡା ସବୁ ଅଫଲାଇନ। ଓକେ ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଫ୍ ଅଛି, ତ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, just go through the model answers and go through your book. Okay, please focus on your textbook. ଠିକ ଅଛି ତ? ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନୋଟ ଗୁଡା ମୁଁ ଦଉଛି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ସେକ୍ସନ ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଲେଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମ୍ସ ରହୁଛି, 3-4ଟା କେସ୍ ଲ ରହୁଛି, ସେଗୁଡା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି। ବଟ୍ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କୁ ଭୁଲିଯିବି। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରଥମେ ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ କ୍ଲାସ ନୋଟ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଆଉ ବି ଯୋଉ ନୋଟ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କାହିଁକିନା କନସେପଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ରହିଯିବ। ଓକେ ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ନ ପଢିଥିବେ ମେ ବି ଖାଲି ନୋଟ୍ସ ପଢିଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଓକେ ସୋ
your best friend is your textbook. Textbook টা প্রথমে ভালো পড়ো। Okay. Any other questions? Else we'll stop here. Okay, so enjoy your holiday tomorrow. We'll again meet on Thursday.